Okay, hi, hello, good evening, and welcome back to a brand new video series for the subject of legal reasoning. And the name of this series is Back to Basics. And as the name suggests, we are going to talk about the basics. Now, when you talk about basics in the subject of legal reasoning, we primarily discuss four important subjects. One of them is law of torts, one of them is law of contracts, the third is the Indian Constitution, and the fourth is criminal law. So, criminal law, constitutional law, tort law, and contract law. These are the four primary subjects which we are going to study and cover for our CLAT exam, ALET exam, and SLAT exam. Apart from this, there are also multiple miscellaneous topics which are present. Although the syllabus is not specifically defined, but based on past year trends, these are the four subjects which feature questions in almost every year. In today's video, we are going to start with the subject of law of torts. So this would be an introductory class where we would just have an introduction to what exactly do we mean by law of torts and what are the important terms which you should know when we are about to study law of torts. So without any further ado, let's begin today's class and start with our first session. I'll just quickly present the screen with you guys. I also took a class on this subject recently last week, and this is going to be sort of a recap, and for people who did not watch that class, you can also follow along. So talking about introduction to law of torts, my name is Kovin Singh. What exactly do we mean by a tort? What is the meaning of the word tort? Now tort comes from a Latin word which means tortum, and tortum means twisted. Why do we say twisted? Because torts usually talk about offenses or instances which are twisted in nature, which are tortuous in nature, which are problematic in nature. Now, when you talk about the Limitation Act of 1963, there is a definition of tort as well. This is the legal definition. Tort is a civil wrong, which is not exclusively breach of contract or breach of trust. So here we saw 4 5 new words. Let's understand what do they mean. Civil wrong. There are two types of wrongs: civil wrong and criminal wrong. We'll talk about this in detail later, but for now, let's just understand that criminal wrongs are concerned with crime or criminal activities and are punished by BNS. And the procedure is mentioned in BNSS. Earlier, it used to be IPC and CRPC. When you talk about civil wrongs, these are not usually criminal in nature. These are related to other disputes, civil disputes like disputes of property, disputes of family law, other miscellaneous disputes like nuisance, negligence, and similar, right? So in civil wrongs, you usually don't have, jail time or what you call imprisonment or punishment. You have penalties, you have damages, right? In criminal wrongs, you might have penalty or you might have imprisonment or punishment, or you might have even both. Okay. So tort is a civil wrong. What does that tell you? That there is no punishment in tort. Okay, which is not exclusively breach of contract. What is a contract? A contract is a legal document which is binding on two or more parties where they decide the terms on how they would agree on certain thing. Correct? That is a contract that we would do this according to this procedure. And I would be doing this for you, you would be doing that for me. So a tort is not a breach of contract, neither it is a breach of trust. So breach of trust is धोखा है ना, trust is भरोसा, breach of trust is भरोसे को तोड़ना. So it's not breach of trust, it's not breach of contract, it is a civil wrong. Okay. So now we understand what is a civil wrong. It's not a punishable crime. Instead, damage and compensation is awarded. यानी कि अगर मान लो if someone is throwing garbage outside your house, then that would be more of a civil wrong rather than a criminal wrong, and that person would be liable to pay you compensation or pay you damages. Damages is very similar to compensation. Basically make good of your loss, whatever harm has happened to you or whatever you have suffered. It could be physical injury, it could be mental injury, it could be emotional injury. Making good of that loss through damages. This does not mean the damage which happens when, let's say, you crash your car. It's not that damage. Here, damage means compensation, you could say. It's not complicated. So, civil wrong is not a punishable crime. Instead, damages and compensation is awarded, and tort is a type of civil wrong. Now,
Other things which are a characteristics of torts. Here we are talking about characteristics of torts. So it's a civil wrong, and there has to be a legal duty. Now, what do we mean by having a legal duty? You need to have an obligation which you have breached, and that is how a tort comes into picture. So, to give you an example, you have a legal duty to keep your surroundings clean, to keep your neighborhood clean. And if you breach that legal duty, you are committing a tort. Okay. Now, this is just one example. There could be multiple, n number of examples. Let's say there is a duty on you to keep the roads around your house free of obstruction. Okay. But let's say you park a big rock in the middle of the road. You keep a big rock in the middle of the road, and as a result, some people get into accidents, some people are late to their office, all of those things. So you breached a legal duty, and that is why you committed a civil wrong. You would not be punished as a criminal, but you would be liable to pay damages and compensation. So there has to be a legal duty. If there is no legal duty, a tort cannot arise, right? Then there has to be damage which is involved. It could be a loss, hurt, or deprivation to person, property, or reputation. We'll talk about this in detail as well. What do we mean by deprivation or hurt to person, property, or reputation? Okay. Then we have infringement of legal rights. So there has to be a violation of legal rights of a person. That is, it could be a right to privacy, it could be right to life, it could be right to freedom of speech, it could be anything. If there is an infringement of a legal right, a tort can arise. Then another characteristics is compensation is involved. It's a sum of money amount as compensation to the plaintiff. Who is a plaintiff? The person who has suffered that injury, whose right has been violated. So a plaintiff is someone who complains, who takes the plaint ahead. जो प्लेंट फाइल करता है दैट इज द प्लेंटिफ, एंड जो उस प्लेंट को डिफेंड करता है दैट मीन्स अ पर्सन हु डिफेंड्स हिज केस कि मैंने ऐसा नहीं किया, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ defendant. So the plaintiff is the one who complains or takes the plaint to the court, and defendant is the one who defends that plaint. Simple. Okay. Now talking about what are the essential elements of a tort. When you talk about essentials of a tort, there has to be a wrongful act. The act which you committed has to be wrong. The act should be in violation of your legal rights, and there has to be legal damage which occurred as a result. Right. Now, when we talk about legal injury, we were discussing that there can be three types of legal injury. One can be injury to your person, one can be injury to your reputation, one can be to property. Reputation is very simple. What would be injury to your reputation? Classic example, defamation. Let's say that someone said anything derogatory or humiliating about you in a public space, which lowered your reputation in the eyes of those people. You can charge them against, you can file a plaint against them for defamation. So that is legal injury to your reputation. By the way, defamation, interestingly, is a tort as well as a crime. So defamation is a unique offense which is also a crime and also a tort. So it's a civil wrong as well as a criminal wrong. Okay. Now, when you talk about legal injury to person, what would be an injury to a person? Assault, battery, false imprisonment, defamation as well. So what is assault? Assault is the threat or fear of being harmed. So for example, if you're walking on a road and a stranger, let's say, points a knife at you, shows you a knife, he is committing assault against you. Assault necessarily does not mean that आपको harm हुआ ही है. The threat of harm or the fear of harm is enough to constitute assault. आगे चल के डिटेल में समझेंगे assault, battery, ये सारी चीजें. Battery is when you are actually hit or actually injured. So if he stabs you with the knife, then he would have committed the offense of battery. ठीक है. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब धोखे से बंद कर लेना किसी को, सिंपल एज दैट. नाउ लीगल इंजरी टू प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? लीगल इंजरी टू प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स दैट योर प्रॉपर्टी से related legal rights have been violated. It could be nuisance by someone. Someone is, let's say, playing very loud music for very long hours at night. So that is a nuisance to your property. Trespassing. Someone is coming into your house without your permission. Someone is trespassing on your land. That could be legal injury to property. Then fraud, of course, all of you understand what is fraud. Okay, now before we move on and understand other concepts, it's important to understand
that we were talking about violation of rights, right? There has to be a violation of legal right, a legal duty in order to constitute a tort. In this context, rights are of two types: right in rem and right in personam. When you talk about right in rem, these are the rights available against the whole world to you. And rights in personam are available only between person and individuals. So, a good example of right in personam could be a contract, which is between only two people, right? Let's say Ram and Sham enter into a contract where Ram would pay Sham 100 rupees and Sham would give a packet of chips to Ram. This is a simple contract where they have rights and obligations against each other. Now, when Ram has paid 100 rupees to Sham, Sham has a right, Ram has a right to take chips from Sham and vice versa, correct? But when you talk about right in rem, these are the rights which are available against the whole world. That means, for example, no one can defame you in person, right? No one can be defamatory to you. That's against the whole world. You don't have to sign a contract with everyone in the world कि आप मेरे साथ defamation नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे. No, it just exists. Same is for nuisance. कि you have a right against everyone that no one would cause nuisance to you or trespass on your property. So I think you might have gotten a hint that torts are what type of rights, or torts arise out of what type of rights. Arise out of rights which are right in rem. That means right against the whole world. Right in personam are more private in nature between two individuals or two or more individuals or persons. Okay? So that is what right in rem and right in persona means. Some other legal maxims which you need to know before we proceed are injuria sine damnum, damnum sine injuria, and ubi jus ibi remedium. अब सुनने में काफी अजीब से नाम है ये, बट दे आर वेरी सिंपल. इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज. साइन वर्ड का मतलब है विदाउट, ठीक है. विदाउट, अरे यार, विदाउट. नाउ अगेन यहाँ पे भी साइन है, यहाँ मतलब विदाउट. डैमनम मतलब डैमेज, इंजूरिया मतलब इंजरी. इंजूरिया मतलब इंजरी, डैमनम मतलब डैमेज. आगे पीछे ऐसे वो अक्षय कुमार वाला मीम. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो इंजूरियस एंड डैमनम मीन्स आपको इंजरी तो हुई है. अब ये कौन सी इंजरी है? ये चलते चलते फिसल गए और पैर में चोट लग गई, वो वाली इंजरी नहीं है. दिस इज लीगल इंजरी. That means a violation of your legal right. That is called injury in this context. Without damage, ऐसा कोई आपको नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई चोट नहीं आई, वैसा कोई डैमेज नहीं हुआ आपको. सो इंजरी हुई यानी कि आपकी लीगल राइट वायलेट हुई, लेकिन डैमेज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ. देन डैमेज हुआ लेकिन कोई लीगल राइट नहीं वायलेट हुई. ठीक है, नुकसान तो हो गया लेकिन ऐसा कुछ लीगली किसी ने कुछ गलत नहीं किया आपके साथ. तो दैट इज डैमनम साइन इंजूरिया. दोनों के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. इंजूरियस एंड डैमनम का बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि आप अभी जैसे दिल्ली में इलेक्शंस हुए ना 5 फरवरी को, आप वोट डालने गए, आपने बोला मुझे लेट से एबीसीडी पार्टी को वोट डालना है. अब जो इलेक्शन ऑफिसर था वो XYZ पार्टी को फेवर करता था, एंड उसने आपको रोक दिया कि नहीं भाई साहब, आप एबीसीडी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे, आप घर जाओ. और आपने कहा नहीं नहीं मैं तो डालूंगा. उसने कहा नहीं नहीं ये लाठी दिख रही है, ये पड़ेगी अभी. तो आप घर आ गए. अब क्या आपको कोई डैमेज हुआ यहाँ पे? लेट्स से चलो आपका कैंडिडेट, एबीसीडी पार्टी का कैंडिडेट भी जीत गया, ठीक है, उसकी सरकार बन गई, आपको कोई डैमेज नहीं हुआ, आप घर आ गए चुपचाप मुंह उठा के. बट क्या आपको कोई इंजरी हुई? क्या आपको कोई लीगल इंजरी हुई? क्या आपकी कोई लीगल राइट वायलेट हुई? बिल्कुल. आपकी राइट टू वोट वायलेट करी गई, राइट. आपको राइट टू वोट एक्सरसाइज नहीं करने दिया गया, आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट हो गया. सो आपको एक तरीके से लीगल इंजरी हुई, बट डैमेज कोई नहीं हुआ. सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंजूरिया साइन डैमेज. नाउ सेकंड केस सिनेरियो समझो. आपने एक शोरूम खोला, लेट से कार्स का शोरूम खोला. लेट से यू आर सेलिंग कार्स ऑफ मर्सिडीज. ठीक है, बहुत बढ़िया सेल हो रही थी आपकी, हाई फाई लोग आ रहे थे, महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे थे आपसे, आपका मस्त चल रहा था. अब आपका बिजनेस देख के आपका फ्रेंड आता है, फ्रेंड भी चलो दुश्मन आता है, एंड वो बाजू में खोल लेता है BMW का शोरूम. BMW और BMW जो भी आप कहना चाहो उसको, तो वो BMW का शोरूम खोल लेता है, एंड अब आपकी सेल्स जो हो जाती हैं 50%. आधे लोग BMW खरीदने लग रहे हैं, आपका तो बहुत पैसे का नुकसान हो रहा है. बट क्या आपकी कोई लीगल राइट वायलेट हुई है? क्या आपका सिर्फ अधिकार था उस रोड पे एक कार का शोरूम खोलने का? नहीं, उसका भी उतना ही अधिकार था, उसकी भी उतनी राइट थी. सो देयर हैज बीन डैमेज, यू आर सफरिंग अ लॉस, मॉनेटरी लॉस, बट देयर इज नो लीगल इंजरी. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया. ये दोनों आगे चल के हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में काफी काम आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ.
तीसरा वाला बहुत सिंपल है, उबी जस्ट इबी रेमिडियम, जहां एक राइट है वहां उसकी रेमेडी है, बस इतना ही है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, एंड दिस इज अ अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स कि भाई अगर आपकी राइट है तो हमारे पास उसकी रेमेडी है, ठीक है। अगर आपकी राइट वायलेट हो रही है तो देयर वुड बी अ रेमेडी वेयर यू वुड गेट कॉम्पेंसेटेड, सिंपल एज दैट। उबी जस्ट इबी रेमेडियम, जहां राइट वहां रेमेडी। ओके, नाउ आगे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन अ टॉर्ट एंड अ क्राइम, एंड दिस would probably be the last thing which we'll do today before we wrap up today's first session. Now, the difference between a tort and crime is pretty simple. We understood that tort is a civil wrong and crime is a criminal wrong. Criminal wrong is against the whole society, against the state, whereas tort is just against you, उसमें सिर्फ आप ही को नुकसान हुआ होता है और तो किसी को नुकसान एज सच मोस्टली नहीं हुआ होता, ठीक है। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे केस किसके अगेंस्ट होता है, बाय द अग्रीव्ड पार्टी होता है, अगेंस्ट द पार्टी विच हैज कॉज्ड यू डैमेज, वेयर एज इन क्राइम द प्रोसिक्यूटर इज द स्टेट, यानी कि जो प्लेंटिफ होता है वो स्टेट होता है, स्टेट जो है कंप्लेंट लेके आता है। क्यों? क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट इसको ऑफेंस माना जाता है, इसीलिए आप कई बार देखोगे कि जो आपके केसेस होते हैं क्रिमिनल लॉज के वो अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, जैसे सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या फिर एबीसीडी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, या फिर एक्स वाई जेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारे केसेस अगेंस्ट द स्टेट है। यहाँ पे स्टेट इज वन ऑफ द पार्टी, क्योंकि क्राइम को उस नेचर का माना जाता है कि उससे पूरी सोसाइटी को फर्क पड़ता है। अगर आपने मर्डर कर दिया तो आप एक खतरा हो पूरी सोसाइटी के लिए, तो स्टेट आपके अगेंस्ट केस करेगा, ठीक है। whereas in tort it's just between two parties A versus B, so उसमें इस तरीके के आपको केस देखने मिलेंगे, उसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता। टॉर्ट में आपको मिलते हैं डैमेजेस यानी कि कॉम्पेंसेशन, एंड पनिशमेंट मिलती है आपको क्राइम में, जैसे सजा मिलती है। Now, tort is uncodified, whereas crime is codified. What do we mean? Crime को पूरा उसके सारे laws लिखे हुए हैं पहले से. It's codified in the IPC. Earlier it was IPC, now it's BNS. मतलब उसका एक proper code of law है, which is written. Whereas tort is uncodified. अब अगर आप बोलो uncodified है तो हम कैसे समझेंगे कि tort क्या होता है? देखो कुछ उसके set principles हैं, which are there, and most of it are derived from precedents. What do you mean by precedents? जो ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस हैं कोर्ट के, इट कुड बी इंडियन कोर्ट्स, इट कुड बी फॉरेन कोर्ट्स, सो जस्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड प्रेसिडेंट्स हमारा पूरा टॉर्ट लॉ चल रहा है, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाई दिस इज अनकोडिफाइड, इसको कहीं लिखा नहीं गया है कि दिस वुड बी ट्रेसपास एंड ट्रेसपास के ये प्रोविजंस होंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, इट्स जस्ट अनकोडिफाइड। देन टॉर्ट में इंटेंशन इररेलेवेंट होती है, क्राइम में इंटेंशन बहुत रेलेवेंट होती है। कैसे रेलेवेंट होती है? लेट से आप सड़क पे चल रहे हो विद कार एंड यू सी अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, सड़क पे चल नहीं रहे, मतलब यू आर ड्राइविंग अ कार, यू सी अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ऑन द रोड एंड यू थिंक जस्ट आउट ऑफ फन एंड जस्ट आउट ऑफ प्योर इविल लेट्स क्रश दिस पैसेंजर। तो आपने फिफ्थ गियर डाला, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो सिर्फ एक्सेलरेटर दबाया एंड यू क्रश दैट पर्सन विद द फुल इंटेंशन ऑफ किल दैट पर्सन, of killing that person and you killed that person, ठीक है। अब इस केस में you would be charged for murder because आपने intentionally किसी की जान ली। ऑन द फ्लिप साइड आप नॉर्मल अपना ड्राइव करते हुए जा रहे थे मस्त अपना 50 की स्पीड पे, एंड अचानक से एक आदमी भागता हुआ रोड क्रॉस करके आ गया एंड उसको बचाने के लिए यू टर्न्ड योर कार एंड यू एक्सीडेंटली किल्ड अ चाइल्ड हु वाज प्लेइंग ऑन द साइड वॉक, ठीक है। आपने गाड़ी से इधर मोड़ी गाड़ी और गलती से एक बच्चे को उड़ा दिया और वो बच्चा मर गया, ठीक है। तो अब वुड यू बी चार्ज ऑफ मर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड? नो, यू वुड बी चार्ज ऑफ प्रोबेबली किलिंग बाय एक्सीडेंट, और अगर आप लेट से नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हो डेथ बाय नेग्लिजेंस, आपका इंटेंशन वहां पे नहीं था, आपकी सजा कम होगी ऑब्वियसली, ठीक है। सो इंटेंशन मैटर करता है क्राइम। टॉर्ट में आपने गड्ढा खोद दिया, अब आप बोलो मेरा इंटेंशन नहीं था इसमें कोई गिर जाए, तो क्या वो रेलेवेंट है? नहीं, वो रेलेवेंट नहीं। आप किसी के घर में घुस गए, आप बोलो मेरा इंटेंशन नहीं था चोरी करने का या इनके घर में घुस के कुछ हरकत करने का, तो क्या वो रेलेवेंट है? नहीं, वो रेलेवेंट नहीं है। आप किसी को लेट से ऐसे बंदूक दिखाओ और उसको हार्ट अटैक आ जाए और आप बोलो मेरा इंटेंशन नहीं था इसको गोली मारने का, रेलेवेंट है? नहीं है रेलेवेंट। सो इसका मतलब टॉर्ट में इंटेंशन इररेलेवेंट होती है।
आपको उतना ही कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, आपने इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया। वेयरएज क्राइम में इंटेंशन इज वेरी रेलेवेंट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। तो आज की क्लास में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम, सम इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स, what are the different types of rights, right in rem and persona, what are the types of legal injury under law of torts, essential elements of law of torts, that एक wrongful act होना चाहिए, violation of legal right होना चाहिए, and legal damage का provision होना चाहिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, कॉम्पेंसेशन, सिविल रॉन्ग, लीगल ड्यूटी एंड डैमेजेस, सिंपल। एंड टॉट के हमने ओरिजिन समझी कि टॉट वर्ड आया कहाँ से, एक लैटिन वर्ड टॉटम से आया जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड, ठीक है। एंड हमने डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट में जो दिया है वो भी देखी। So this is all what you needed to know for the first introduction to tort lesson. In the next class, we'll explore and understand more about tort. We'll talk about different types of tort. We'll talk about defenses in torts and multiple other things. So stay tuned to this particular series. Make sure you drop a like and share this video with everyone who is preparing for law entrance exams or everyone in general. And don't forget to subscribe to the channel because आपको तभी notification आएगा and you can watch the next video in this series as well. So do subscribe and do turn on your bell icon and like, share, subscribe, and do everything you can to make this video reach maximum people and benefit maximum people. And that's all for today. Thank you so much. I'll see you all in the next one. Till then, take care. Bye bye. Signing off.